गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केजमल का तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग वन मोर कंसेप्ट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स फॉर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 9th in math. Firstly, I am giving you happy Makar Sankranti for your family. Every happiness come in your life. So, as I have already given you the concept and taken typical and different type of questions for this cube and cube root for Navodaya Vidyalaya Sainik School for class 6. You can see from there also the link of the my previous videos are in the description below. So now I am taking the cube again, giving you the more concept about that cube. Cube is the, if you are taking any number or multiply by it 3 times, so you get 3. I have given you the concept about the powers in my previous videos in class 7 and 8. The power of any numbers adding, so this is the cube in that case. So if you define this cube, that means a number which is multiplied by itself thrice. So if you are taking any non-zero number x, then you multiply this in 3 times. In the case of rational number, you get the cube of the numerator and dividing it by the cube of denominator. Yani separately, in the case of rational number, you have, if you are given to find out the cube of that, so how you will get, जो न्यूमरेटर है उसको क्यूब कर दें और डिनोमिनेटर को क्यूब कर दें और डिवाइड कर दें न्यूमरेटर फोर डिनोमिनेटर से, यू गेट द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर. नाउ वी विल टेक द perfect cube. In the case of perfect cube, any natural number, suppose in any natural number, then for the any integers m into m, for any given natural number,
if you multiply the any integers m into 8, then n is set to the perfect cube. Now the properties of cube, if you find the cube of any even natural number, then you get the even number. Second, if you find the cube of any odd natural number, then you get odd number. Third one, if you want to find out the cube of any negative integers, then you get negative number. Next one, if for a given rational number a by b, if you have to find the cube of a by b, then you get a by cube, that means you get this separately, the cube of a divided by the cube of b. This is the properties of cube of given numbers. So some more important properties of, if you are taking some more important properties of cube, properties of cube, then the numbers with unit place 1, 4, 5, 6 and 9. The number with unit place 1, 4, 6, 9 and this, the numbers, the unit place this cube of, लिख दो cube of numbers with unit place a get same unit place. अगर ये जो ए 1, 4, 5, 6 और 9 होगा यूनिट प्लेस में, तो यू गेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर सेम यूनिट प्लेस सेम होगा.
and the cube of the number with unit place, cube of the number, cube of the number with unit place 2, you get the number with unit प्लेस 8। अगर आप कोई ऐसा नंबर है जो 2 जो है यूनिट प्लेस उसका है, तो उसका जो क्यूब होगा वो 8 होगा। एंड वाइस वर्सा, इसको कह सकते हैं, ये वाइस वर्सा मीन्स होता है कि आपका उल्टा, अगर यूनिट प्लेस अगर 8 है, क्यूब ऑफ दी नंबर विथ यूनिट प्लेस 8 होगा, तो वो जो आएगा क्यूब वो 2 के साथ यूनिट प्लेस 2 होगा, वाइस वर्सा। एंड द केस द क्यूब ऑफ द नंबर विथ यूनिट प्लेस 3 अगर होता है तो क्या होगा, यू गेट द नंबर विथ यूनिट प्लेस 7। अगर आप 3 जो है कोई यूनिट प्लेस का नंबर है उसको क्यूब करते हैं तो 7 जो है वो यूनिट प्लेस का नंबर मिलेगा। और इसका वाइस वर्सा उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, अगर 7 अगर यूनिट प्लेस के नंबर को अगर क्यूब करें तो 3 जो है वो देगा। तो आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट अबाउट द क्यूब ऑफ द numbers and properties of that, and next topic I will take the cube root, means cube हुआ, now we will take the cube roots, the property of cube roots. Okay.